हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अम्बरीश तिवारी एंड आज मैं आप सभी के सामने बात करने जा रहा हूँ द राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल या एक्ट 2019 पे। और एज यू ऑल माइट बी अवेयर दैट आई एम डूइंग अ स्पेशल लेक्चर सीरीज ऑन द चैनल यूपीएससी लाइफ, and that special lecture series is basically about the bills and the acts that have been passed or tabled before the parliament in this very successful and very productive budget session, or which got concluded 2 weeks back, which was also the first session of the Narendra Modi government 2.0 and the 17th Lok Sabha as well. So, moving on to the nitty-gritties of the Right to Information Amendment Bill. The bill was introduced on July 19th, 2019 by the Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Mr. Jitendra Singh. It became the law on 25th of July 2019 when it was finally passed by the Parliament and also received the assent of the President. This seeks to amend, as I have written in the slide already, that it seeks to amend to the Right to Information Act 2005. The previous act provided for a statutory right, a right which was bestowed by that act to every citizen, one and all, to question their own government, their own local authorities, on how the governance is actually happening, how the machinery is functioning, and whether the governmental schemes are going on in a right direction or not. It is one of the most prestigious and the most majestic steps taken after independence to ensure transparency and accountability. Let's see what are the features of the bill. So, the first is about the term of information commissioners. Under the previous regime, the Chief Information Commissioner and information commissioners appointed at both the national and the state level to implement the provisions of the Act. These posts were created by the previous regime. Okay, the previous act also stated that the CIC and other ICs, both at the central and the state level, shall hold office for a term of 5 years. It was a fixed term that was guaranteed by the statute of 2005, which got amended. Now, what happened after the Amendment Act? The Act removed this provision and stated that the central government will now notify the term of office for the CIC and ICs both. So, कितना साल वो रहेंगे, ठीक है, वो कितना दिन तक CIC या IC के पोस्ट पे रहेंगे, कितना दिन तक कार्यरत होंगे, ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे डिसीजंस अब सेंट्रल या केंद्र सरकार लेगी. ठीक है, अब उसको कोई मतलब एट द प्लेजर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, which is given in I hope that I think it is given in Article 309, which says कि सिविल सर्विस, जो सिविल सर्विस है इंडिया का, सिविल सर्विस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स, दे आर एट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ द प्रेसिडेंट. जब वो चाहेंगे तब उन्हें टर्मिनेट कर सकते हैं. वही यहाँ पे जो एक पहले गारंटीड था, मे बी उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए उसको डाइल्यूट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एंड इट हैज स्टेटेड दैट द टर्म ऑफ ऑफिस शैल बी एट द कंप्लीट विल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. Now coming to the determination of salary. The previous regime stated that the salary of CIC and ICs at the central level, अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएशन है क्योंकि मैं पिछला regime भी आपको समझाना चाह रहा हूँ. At the central level पे जो CIC और ICs हैं, it will be equivalent to the salary paid to the Chief Election Commissioner and Election Commissioners respectively. मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर होगी सेंट्रल लेवल पे. सिमिलरली, the salary of the chief information commissioner and ICs at the state level will be equivalent to the salary paid to the election commissioners and the chief secretary to the state government respectively.
स्टेट में थोड़ा सा बदल जाता है। स्टेट में ऐसा हो जाता है कि जो सैलरी सीआईसी और आईसीज ड्रॉ करेंगे, सीआईसी की जो सैलरी, स्टेट वाले सीआईसी की जो सैलरी होगी वो वहां के इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर होगी और आईसीज की सैलरी चीफ सेक्रेटरी की बराबर होगी। स्टेट में थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। नाउ द बिल सीक्स टू अमेंड दिस प्रोविजन टू स्टेट दैट सैलरीज, अलाउंसेस, emoluments and other terms and conditions of the service of the central and state CICs and ICs will all be determined by the state government। मतलब सैलरी भी, अलाउंस भी और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सारे सीआईसीज और आईसीज के अब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मतलब टर्म ऑफ ऑफिस भी डिसाइड करेगी, सैलरी अलाउंसेस भी डिसाइड करेगी। अब आगे देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बदलाव किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट इज डिडक्शंस इन सैलरी। सैलरी में से कटौती की बात। The act states that at the time of the appointment of CIC and ICs, if they are receiving pension or any other retirement benefits for previous government service, their salaries will be reduced by an equal amount to their pension that they will be receiving at that point of time। मतलब एक्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे हाइपोथेटिकल लेना चाह रहा हूँ, एक आईएएस ऑफिसर है, वो रिटायर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डेपुटेशन था उसकी लास्ट पोस्टिंग एज से मे बी रेवेन्यू सेक्रेटरी, ठीक है, और वो रिटायर हो गया और उसके 2 साल बाद उसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया। तो वो जो पेंशन रिसीव कर रहा था, वो जो सैलरी अब सीआईसी के तौर पे 2 साल बाद रिसीव करेगा, उस सैलरी में से वो पेंशन का अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोविजन खारिज हो चुका है। नाउ द बिल रिमूव्स दिस प्रोविजन। नाउ प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विस, किन किन गवर्नमेंट सर्विस वालों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा? इंक्लूडेड सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन established under a state or a law, that is PSUs and all, and the government company owned or controlled by the state, central or state government। ओके, तो इन सब में से जो प्रीवियस गवर्नमेंट सर्वेंट इन चारों में से होंगे, वो जब सीआईसी या आईसी बनेंगे तो जो पेंशन वो रिसीव किए होंगे वो उनकी उस सैलरी में से कट जाएगी जो वो सीआईसी और आईसी बनने के बाद ड्रॉ करेंगे। द बिल रिमूव्स दिस प्रोविजन एंड नाउ हियर वी हैव रीच्ड, दिस वाज अ वेरी स्मॉल वीडियो, here we have reached to the end of this video। thank you so much for your cooperation, thank you so much। I shall see you later in some other video। Till then, bye bye, have a good night and keep reading।